Okay, so in last class we were talking about some fundamental graphs of functions. So today we will extend that topic. तो मैंने आपको बताया था कि आपको वो फंडामेंटल ग्राफ्स अच्छे से आने चाहिए. You should be remember as well the domain, the range of that fundamental graphs, the figure of that fundamental graph. You should remember, because from second module onwards, definitely we will use that graph directly. So you should be remembered very carefully. One basic function graph we have already discussed. So, excuse me, sir. Yes, please. Sir, actually, I had one doubt regarding the previous class topic. Please ask after the class. Please ask. Okay, sir. Okay. Okay. So, the second graph is fx is equal to x square. The screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the graph is fx is equal to x square. That is y is equal to x square. So it's a quadratic equation, and you very well know that the quadratic equation of any graph will be of parabola. So we just find the values of y corresponding some values of x. कुछ हम values रखते हैं और y की values find करते हैं. For example, we put the value x is equal to -2 and get the value 4 after putting this in this function. -1 put किया हमको 1 मिल गया, 0 put किया 0 मिल गया. After putting x is equal to 1, we obtain y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 4. So these are some standard points we are taking here for drawing any graph, and we draw the graph. It's a parabola because it's a quadratic equation. So keep in mind, quadratic equation is always a parabola. So x is -2, y is 4. So x is -2, this is -2, and this is +4. So this is the point. X is -1, y is +1, x is -1, y is +1. So this is the point. X is 0, y is 0, x is 0, y is 0. So it's passing through origin, no doubt. X is 1, so y is 1, x is 1, y is 1. So this is the point, and so on. And we join these points, we obtain a standard parabola, which is called upper parabola, passing through the origin. Okay. Can anybody tell me what is the domain of this function? Please unmute yourself and tell me the answer. Infinity. Sir, -infinity to infinity. Yes, very good. You are correct. Because domain is the value of independent variable, or domain is the value of x at which function is defined. So we can put any value of x here. There is no issue. So domain will be the set of real numbers. Domain will be the set of real numbers, or you can say any real value. Any real value from -infinity to infinity. Now, what will be the range of this function? What is the meaning of range? The range is basically the values of y corresponding to values of x. The range is the values of y corresponding to the values of x. तो आप देखिए यहां पे जब x 0 पुट करेंगे तो y 0 मिलेगा. x पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, x नेगेटिव पुट करेंगे तो भी y पॉजिटिव मिलेगा. So we always obtain the positive real number including 0. That's why the range of this function is 0 to infinity, including 0. जब ये क्लोज ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब 0 इंक्लूड है, और जब ये ओपन ब्रैकेट आता है इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है. Understood? So the range is 0 to infinity, or all positive numbers including 0. So this is the graph of y is equal to x square.
and the corresponding domain and range. Now we move to third graph, which is again very standard graph. Y is equal to x cube, right? So we are taking some points, some standard points. At x is 0, y is 0. So this function is passing through origin, no doubt. If x is minus 2, then y is minus 8 after putting y is equal to x cube. If x is minus 1, then y is plus 1. Minus 1, sorry. If x is plus 1, then y is plus 1. If x is 2, then y is 8. So by taking these standard points, if we draw the graph will be like this. अब ध्यान रखना, आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए. You should be remembered. Y is equal to x cube का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है. ये आपको याद होना चाहिए. ये ग्राफ आप बना सकते हैं. By taking all these points or some other points, you can draw this graph. But the important thing, drawing a graph is not so important for you, because it's a very small thing you can do very easily. Put the value of x, get the value of y, put the value of x, get the value of y. So it's very easy for you. So drawing is not important for you. The important is that you should be remembered. You should remember this graph. This is y is equal to x cube. Yes, can anybody tell me what is the domain of this graph? Minus infinity to infinity. All positive real numbers? Yes, sir. No, sir. All real No, numbers. sir. No. All positive real numbers. It's correct, because you can put any value of x. There is no issue. The function is defined at each and every value of x. You But can put any negative value. आप नेगेटिव पुट कीजिए, नेगेटिव में भी कोई इशू नहीं है. yes, sir. Yes. And what is the range? Definitely, if you are putting x is 0, you will get y is equal to 0. If you are putting x is positive, you will get y positive. If you are putting x negative, you are getting y negative, because there is cube here. So the range will be all positive real number, all real numbers, or you can say all the numbers from minus infinity to infinity. So this is y is equal to x cube. Next graph. Y is equal to under root x, or fx is equal to under root x. Right? So we are taking some points, some standard points. Now this is very important. Keep in mind, if you are putting x is equal to 0, you will get y is 0, because under root 0 is 0. If you are putting x is equal to 1, then y will be 1, because under root 1 is 1. If you are putting x is 4, you will get y is equal to plus minus 2, or in standard form y is equal to 2, because under root 4 is 2. But the problem is that if you are putting any negative number, say if you are putting x is minus 1, then under root minus 1 is iota. Under root minus 1 is not real number. Under root minus 1 is iota, which is an imaginary number. We cannot draw the imaginary number on the graph. We cannot draw the imaginary number on the copy. So if you are putting any negative number here, you will get imaginary number, or you can say undefined. Undefined हमने वैसे लिख दिया है, otherwise it's an imaginary number, we cannot draw it.
तो इसको देख के ही पता लग गया होगा आपको व्हाट विल बी द डोमेन। यस, बताइए। 0 to 0 to infinity. infinity. Correct. All positive real numbers including 0. Very good. Very good. And what will be the range? Same, sir. 0 to infinity. No, 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 no. No, 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 no. Under root 4 का वैल्यू क्या होगा? Plus minus 2. प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 भी तो आ रहा है। Yes, sir. Minus infinity All plus real. infinity. आ रहा है ना? All real numbers. Sir, minus Yes, infinity to plus infinity. यस यस। All देखते हैं real अभी। numbers. Yes, यस sir. यस, अभी बात करते हैं। सबसे पहले आप इसके ग्राफ को देखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x। इसने सिर्फ अंडर रूट 4 को प्लस 2 लिया है। अंडर रूट 4 का वैल्यू प्लस 2 कंसिडर किया है, माइनस 2 कंसिडर नहीं किया है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, राइट। एक्चुअली आप पेन पेपर है आपके पास, सबके पास? Yes, sir. Write down y is equal to under root x. It means y square is equal to x. If y is equal to under root x, then y square will be x. और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, if there is an quadratic equation in independent variable or dependent variable, then what will be the figure of that quadratic equation? Sir, Parabola. parabola. Always a parabola. So y square is equal to x. Y square is equal to x. It's a quadratic equation in y. Am I correct or not? Yes, sir. Yes. So Yes, sir. definitely y is equal to under root x or y square is equal to x is the same thing. So if you are putting x is equal to plus 4 here, you will get plus minus 2. ये थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए। You will get plus minus 2. तो यहाँ पे ये देखिए, आपको ग्राफ नजर आ रहा है सबको? मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है? This is my pointer. Yes, sir. तो आप देखिए, if you are putting x is equal to 4, ये x is equal to 4 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? +2. क्या मिल रहा है? Plus 2, sir. +2। ऐसे ही x is equal to 4 के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये -2 भी आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, x is equal to जब आप 1 डालेंगे तो अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस 1। तो आपको x is equal to 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये +1 दिख रहा है आपको? हाँ, sir. ऐसे ही हाँ, आपको यहाँ -1 मिलेगा। हाँ, sir. Yes, sir. तो ये ग्राफ sir. जो होगा सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसा बनेगा। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा बनेगा। दिस इज द पैराबोला। Sir, but And we this will is- not take negative part. Sorry, I am not getting your question. Sir, we will not take negative part as vertical line test will fail this graph. No, 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 no. You have to take the negative part as well, because the graph is symmetrical about x-axis. Just see the second phase of this graph, this function as well, which is y square is equal to x. Are you getting my point? This is very important. So Yes, sir, but vertical line test will get 2 points in y. what? Sir, by drawing vertical line parallel to y-axis, we will Yes. get 2 points. Then the Yes. function will not be defined for 2 points. Yes, and I know. I am getting your point. Definitely, you are right. That's why here under root 4 is +2 only. I completely agree with you. But Yes, sir. आप ये सब आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, इसीलिए ये फिगर उसके अकॉर्डिंग है, Yes, sir. राइट? लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। Okay, sir. ओके, Yes, sir. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें, मैं इसको रब कर दूं, अगर इफ आई रब दिस, इरेजर मैंने काम में लिया और मैंने इसको ये रब कर दिया,
तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसी की बात करते हैं तो यू कैन सी दैट द डोमेन इज फ्रॉम 0 to infinity or not? Yes. Yes, The sir. domain is Yes, the sir. Yes, domain sir. is yes, the domain is from 0 to infinity. Yes. And the range will be 0 to infinity as well if we are taking the under root x typical. Okay, so there is no issue. The main thing is that you got the point or not. दिया था ना पहले आंसर रेंज में यही है। Okay, To export it. Yes, sir. now say next graph. Y is equal to modulus of x. आप सबको मॉड्यूलस के बारे में पता होगा। मॉड्यूलस Yes, sir. फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं पता है आप लोगों को? Yes, sir. अगर आपको पता नहीं है तो पेन पेपर लीजिए और मैं डिफाइन कर रहा हूं वैसे डिफाइन कीजिए। मॉड्यूलस x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज x if x greater and equal than 0, the value of this function is minus x if x less than 0. Right? I repeat, modulus x is equal to curly bracket. It is x if x greater and equal than 0, and it is minus x if x less than 0. तो आप ये पेन पेपर में लिख लीजिए। एंड वी आर कंसिडरिंग हियर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू y. सो बेसिकली y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x when x greater and equal than 0 and minus x when x less than 0. These are the points. और आपको पता होगा मॉड्यूलस की खास बात क्या होती है। मॉड्यूलस के अंदर आप नेगेटिव क्वांटिटी भी रखेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। Right? So if you put x is minus 1 here, you will get plus 1. If you put x is minus 2 here, you will get plus 2. The result will be positive whether you are putting negative or positive here. If you put x is 0, you will get y is 0. If you put x is 1, you will get y is 1. If you put x is 2, y is 2. इसे पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा बोला जाता है इसे मॉड्यूलस एक्स को, क्योंकि इसकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है कि इसके दिमाग में अगर आप नेगेटिव चीजें भी डालोगे, नेगेटिव बातें भी डालोगे तो ये आउटपुट तो पॉजिटिव ही देगा। सो इट्स ए पॉजिटिव मैन, इट ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, राइट। और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करना है वो मैंने आपको भी समझाया। y is equal to modulus of x is equal to curly bracket x when x greater than equal than 0 and minus x when x less than 0. तो देखिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, पेन एंड पेपर आपके पास है। मैंने अभी जो फंक्शन डिफाइन किया उसको ध्यान से देखिए आप। x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 के केस में y का वैल्यू x होगा। x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 के केस में y का वैल्यू x होगा। अभी मैंने पेन पेपर पे आपको लिखवाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, when x is positive the function will be y is equal to x. तो आप देख सकते हैं when x is positive the function will be y is equal to x. समझ में आया? एनी डाउट? नहीं सर, नहीं समझ में आया? देखिए मतलब इसको डाउट नहीं है सर, डाउट नहीं है। ओके। इसको समझने के वैसे भी दो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स। एक तो ये जो पॉइंट्स हैं टेबल में बनाए हैं, इन टेबल के पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लीजिए और फिर उनको ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। सबसे पहला मेथड तो ये है जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फंक्शन के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो ये है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इज इक्वल टू दिस हैज वैल्यू x if x greater than equal than 0 and this has value minus x if x less than 0। तो आप इसको पहले वाले पॉइंट को देखिए,
इफ x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, मतलब x का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो y का वैल्यू x होता है। तो यहां देखिए x का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तब y का वैल्यू x होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। और दूसरा पॉइंट, व्हेन x लेस देन 0 y इज माइनस x, मतलब जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है तब y का वैल्यू माइनस x होता है। तो आप देख सकते हैं जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है तब y का वैल्यू माइनस x होता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस स्ट्रेट लाइन is y is equal to x and this straight line is y is equal to minus x. So this straight line y is equal to x for x greater than or equal than 0, and this straight line y is minus x is for x less than 0. So this is the graph of the function modulus x. डोमेन तो आपको पता चल गई होगी। You can put all real numbers. Yes, correct. All real numbers, because you can put any value of x. The function is defined all the way. The function is defined at each and every value of x. That's why the domain is minus infinity to infinity. And what is the range? 0 to infinity. 0 0 to infinity. 0 to infinity, sir. Yes, absolutely correct. Because Because whenever we will each- put negative value, the positive value will only come, sir. No. Yes, very good, very good. Because we are putting any value, we always get the positive value. Even we are putting negative value, we get the positive value as well. That's why, and if we are putting the value 0, we will get 0. So all the positive real numbers will be the range, including 0. Next. Exponential functions. Can anybody tell me by unmuting yourself what is exponential functions? कोई बताएगा? So e to the power x. E to the power x. What? Y is equals to function of x, e to the power x. Okay. Anybody else? Yes, anybody else? What is exponential function? Sir, the reciprocal of logarithmic function. The reciprocal of logarithmic function. Yes, sir. Yes, sir. Not reciprocal, you can say anti-log of logarithmic function. ठीक है? Okay, sir. तो आप ठीक है, आपने So थोड़ा a सा function whose value is constant, which is no. raised to the argument. नो, सिंपल सा कोई बताएगा मुझे? जैसे अभी किसी ने बताया था e raised to the power x, y is equal to e raised to the power x. Sir, if a function fx equal to a की power x, then a should be greater than 0. Very good. This is the perfect definition. The function Sir, y is equal to a raised to the power x. a not equal to 1. Let me speak. The function y is equal to a raised to the power x, where a is positive, is called exponential functions. आप जो e raised to the power x, e raised to the power minus x बोलते हो ना, वो इसके स्पेशल केसेस हैं। अगर इन जनरल हम बात करें तो fx is equal to or y is equal to a raised to the power x, where a greater than 0 is called exponential functions. Right? a greater than 0 होना चाहिए। आप अलग अलग केसेस ले सकते हैं, a का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी ले सकते हैं, और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हैं। इन तीनों केसेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी। So the general and fundamental definition of exponential function is what? Y is equal to fx is equal to a raised to the power x, where a is greater than 0. First case, if you are taking a is equal to 1,
then definitely if we are taking a is equal to 1, then definitely y will be 1 raised to the power x, that is 1. और y का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया. y is equal to 1 एक लाइन होती है which is parallel to x axis. So if you are putting a is equal to 1, you will get a constant function fx is 1. So it is meaningless for us. It's not meaningful at all. Now we are taking a greater than 1, right? Because a must be greater than 0. So if we are taking a greater than 1, for example, we are taking a is equal to 2. For example, we are taking a is equal to 2. So the function will be 2 raised to the power x, right? ठीक है, हम इसके कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं. fx is equal to 2 raised to the power x में आप वैल्यूज डालिए. x का वैल्यू -3 डालेंगे आप, y का वैल्यू 1/8 हो जाएगा. x का वैल्यू -2 डालेंगे, y का वैल्यू 1/4 हो जाएगा. x का वैल्यू -1 डालेंगे, y का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन. So you just put the values of x and get the values of y, and then draw the graph. The graph will be like this. So this is the graph of 2 raised to the power x. याद होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए. This is the graph of 2 raised to the power x. You just put the value and draw the graph, you will get the same graph. Now, what is the effect of varying a? We can see this by looking at sketches of a few graphs of similar functions. अगर हम a greater than 1 वाले केस में अभी हमने a is equal to 2 लिया है. अगर हम a की डिफरेंट वैल्यूज लें, a greater than 1 वाले केस में अगर हम a की डिफरेंट वैल्यूज लें और इस तरह से पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो हमें ऐसे डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे. This is y is equal to a raised to the power x for a is equal to 2. This is y is equal to 5 raised to the power x for a is equal to 5. This is y is equal to 10 raised to the power x for a is equal to 10. So you will get different graphs according to the different values of a. Now we will take the values in between 0 to 1. Now we will take the values of a in between 0 to 1. मैंने आपको 3 केसेस बताए थे. a का वैल्यू 1, a is 1. Second case, a is greater than 1. Third case, a greater than 0 but less than 1. So if a is equal to 1, the function will be constant. We discussed. If a is greater than 1, for example, a is 2, a is 5, a is 10, then you can see it. Now we are considering the third case, if a greater than 1 but greater than 0 but less than 1. It means a lies between 0 to 1. For example, yes, you can see if you are taking a is equal to 1/2, the graph will be like this. If you are taking a is equal to 1/5, the graph will be like this. And if you are taking a is 1/10, the graph will be like this. Okay. So these are the graphs for different values of a in between 0 to 1. So we see the graph of 2 raised to the power x, 5 raised to the power x, 10 raised to the power x. We saw the graph of 1/2 raised to the power x, 1/5 raised to the power x, and 1/10 raised to the power x. Now we will discuss the special case when a is e. This is the joint graph of these all values. When a is 2, when a is 5, when a is 1/2,
when a is 1 by 5. You can compare very easily and you can see how the graph is drawing here, and you can remember very easily by this figure, by this comparison figure you can remember it very easily. पॉजिटिव आएगा 2 5 मतलब ग्रेटर देन 1 होगा तो इस तरह से जाएगा, और अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो इस तरह से जाएगा. So this is the combined graph when a is greater than 1 and when a is greater than 0 but less than 1. Now this is very important for us. The graph of y is equal to e raised to the power x and the graph of y is equal to e raised to the power minus x. So guys, this is the graph of e raised to the power x and this is the graph of e raised to the power minus x. Sir, the common point is 0, 1. Yes, if you put x is equal to 0, you will get e raised to the power 0 is 1. If you put x is equal to 0 in this function, you will get e raised to the power minus 0, that is 1 again. Okay, sir. Right? So you can see both the graphs, and this is very standard graph. At x is equal to 0, the value of y is 1. Can you tell me what is the value of e? Anybody? Sir, 2.178. Yes. 2.178 or 2.71 something? Sir, 2.717. दो आंसर कैसे आ रहे हैं भाई? 2.718. 2.718 281828 मोबाइल में फाइंड कर लिया होगा अब तक तो? हाँ, गूगल पे या मोबाइल पे फाइंड कर लिया होगा कैलकुलेटर यूज करके. Okay, so the value of e is basically 2.718 something, and this is the case when a is greater than 1, because 2.718 is greater than 1, right? अच्छा, इस फिगर की खास बात देखिए आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी फिगर्स हमने देखे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने फिगर्स हम देखे हैं, इनकी देखिए क्या खास बात है. ये देखिए क्या खास बात है. कोई बता सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या खास बात है? Common point. It will never meet at x-axis. It will tend What? to infinity. Definitely it is tending to infinity. Definitely you are correct. Yes. और कोई खास बात है? सर अगर नीचे का वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो स्लोप से स्ट्रेट हो जाता है. ठीक है, वो भी ठीक है. और कोई खास बात है? It does not pass through origin. Yes, correct. Anything else? और कोई खास बात है? सर सबका एक कॉमन पॉइंट है 0 and 1. नहीं, वो तो ठीक है. मैं कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी बात पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जो आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो. ध्यान से देखो इस फिगर पे. और कोई खास बात है जो काम की बात है? Sir, it is an increasing. So the graph is not touching the ground, sir. What? क्या बोल रहे हो? Sir, in some cases the graph is not touching the ground properly. No. X-axis. नहीं, वो तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो बोल दिया ऑलरेडी. और क्या खास बात है? सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए. Sir, they all intersect the y-axis. क्या? What? Sir, Could you they repeat? all intersect the y-axis. Please elaborate. Sir, they intersect at the same point. ना, वो तो ठीक है. x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा ही मिलेगा. If you are putting x is equal to 0 here, y will be 0. X is equal to 0 here, y will be 0. X is equal to 0 here, y will be 0. X is equal to 0 here, y will be 0. Because any number raised to the power 0 is always 1. So it's not
Surprising. Definitely the point will be 0 1 always. y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। Yes. Who are you? What's your name, beta? अनीशा जांगिड। अनीशा, करेक्ट अनीशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x का वैल्यू आप कुछ भी डालिए, x का वैल्यू आप पॉजिटिव डालिए, x का वैल्यू आप नेगेटिव डालिए, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है, खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप 5 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स में या 5 रेज़ टू द पावर एक्स में अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल -2, सो 5 रेज़ टू द पावर -2 का मतलब 1/5 स्क्वायर हो गया ना, वो पॉजिटिव बन गया वापस। सो if you are putting the negative value of x in these functions, you always get positive value of y. कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यू या y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट? तो इसके बेस पे आप डोमेन और रेंज इसके डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, so the domain is -infinity to infinity. Yes, and range you always obtain from 0 to infinity but excluding 0, क्योंकि यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा। ये एक और खास बात है इसमें, देखिए आप खाली पढ़ाई। 0 तभी आएगा जब x की वैल्यू -infinity होगी, और x की वैल्यू -infinity कभी हो नहीं सकती। वो एक अप्रोचिंग केस है, वो एग्जैक्ट केस नहीं है। So any number raised to the power -infinity is 0. तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखने पर y का वैल्यू 0 नहीं होगा। So these are two important points. Exponential function can never be 0. Exponential function can never be negative. So the domain of exponential functions are all real numbers. So the range of exponential functions are 0 to infinity, excluding 0. This is it for today. If you have any doubt, you may ask. Yes, any doubt? Very good. So thank you very much, all of you. And remember all the things, all the instructions which I have given to you. And if you have any doubt, you can ask me. So thank you very much. Stay safe, stay healthy. Thank you.